This 500 rupee Malik Bond Repair Complex is supposed to be a dupe for the very famous Olaplex 3, which is pretty expensive. और आज की वीडियो में हम टेस्ट आउट करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 प्रोडक्ट्स. We will also be testing the K18 Hair Science. अब ये तीनों ही products are supposed to work on damaged hair, right? Damaged, colored, heat treated बाल, which is my hair. And मैं ये products regularly use करती हूँ and Olaplex I've been using since 2019, K18 since 2021. This is a new product for me, but as you can see, इसे भी मैं काफ़ी use कर चुकी हूँ. But I wanted to give you guys a live demo कि products actually कैसे काम करते हैं, किस टाइप के डैमेज पे कौन सा प्रोडक्ट काम करता है. जस्ट बिकॉज सम इन्फ्लुएंसर्स से कि ये ड्यूप है डजंट मीन यू हैव टू बाय इट. ऑल्सो ये होती है मॉर्निंग लुक. थोड़ा बहुत एक्ने दिख रहा है, बेड नहीं बना, बाल बिखरे हुए हैं, तो इस तरह की ऑनेस्टी अगर आपको पसंद है, डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. And I forgot to introduce myself. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie, a certified skincare consultant. आज की वीडियो में लिया है थोड़ा सा break from skincare and we are delving into hair care. And this is something that a lot of you will not realize. I am super passionate about hair care as well. Because, I'll tell you why. I have been coloring my hair from the age of 17, 18. I'm 37. So 20 सालों से मेरे बालों ने मेरा ओरिजिनल कलर नहीं देखा है जो है डार्क ब्राउन. I love coloring my hair. I love styling my hair. वो हर चीज़ जो कहते हैं ना लोग कि ये मत करो वो मत करो बाल खराब हो जाएंगे टूट जाएंगे, वो सब मैंने किया है because that is how I enjoy seeing myself in the mirror. So I break a lot of rules. And जब आप बहुत सारे rules तोड़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है that you take extra care so that you don't like go bald. And honestly, my hair are in a very healthy shape. मेरी बहुत सारी regrowth भी हुई है and that is a whole different video. उस पर हम अलग बात करेंगे. But my hair, given the fact that have been colored for straight 20 years, सारे treatments कराए गए हैं, they are still very healthy. I don't have hair fall, so obviously I'm doing something right. And as a part of that something right has been hair treatments. Hair treatments में जब से मुझे हेयर ट्रीटमेंट्स का पता है मैंने कराई हैं. लेट मी गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड. 2016 में मैंने सबसे पहले केराटिन कराना शुरू किया एंड मुझे एक केराटिन एडिक्शन हो गया था बिकॉज आई हैड टू कीप डूइंग केराटिन कॉन्स्टेंटली एवरी 6-8 months. देन आई स्टार्टेड टेकिंग अ लिटिल ब्रेक एंड जस्ट स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर. Olaplex number 3 is a product that I have used since 2019. कभी कभी मैंने ब्रेक्स लिए हैं but I've always used it. 2021-ish I got introduced to Olaplex 0. तो फिर मैंने इस कॉम्बिनेशन को एक साथ यूज़ किया है बहुत सारा. And then मैं Olaplex और K18 के बीच में ब्रेक्स लेती रही and I started using this product as well. This is a leave-in molecular mask. And I think that is one reason that मेरा हेयर का जो स्ट्रैंड है जो एक्चुअल टेक्सचर है इज स्टिल वेरी हेल्दी डिस्पाइट ऑल द अब्यूज. एंड देन ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम टोल्ड मी, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टोल्ड मी कि ये ड्यूप है. तो लास्ट मंथ मैंने ये भी खरीद लिया विच इज़ द मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स एंड मैंने सब कुछ यूज़ किया है एंड आई कैन टेल यू माई वर्डिक्ट राइट नाउ. बट ऐसे ही मैं बता दूंगी इट्स गोइंग टू बी नो फन, राइट? यू हैव टू सी द रिजल्ट्स yourself to believe कि actually कैसे काम करता है. So in this video we're going to do like a whole live demo. Also मैं बोलना भूल गई थी, please if you like this kind of content etc do consider liking the video and subscribing to my channel. अगर आप subscribe नहीं भी करते हो but if you just like this video then YouTube kind of pushes it further. Thank you. So आज की वीडियो में हम ये करेंगे, right? So we're gonna do a test. The way we are going to do the test is I'm going to section out my hair. Now ये तीनों products लगाने का तरीका थोड़ा अलग है. Olaplex goes on wet hair, this one goes on dry hair and this one goes on washed hair. तो हम कैसे करेंगे? Now because अगर आप Olaplex 3 को Olaplex 0 के साथ यूज करते हो then you don't need to wet your hair because इससे आप पहले बालों को wet करते हो, then you use this product and you leave it on for 30 minutes or more. 1 घंटे तक छोड़ सकते हैं, that's all right. This product, इस पे तो लिखा है that you apply it on your dry dirty hair and leave it on for 1 hour. So ये भी clear हो गया. And this particular section, ये जो है, this is supposed to go on washed hair. So आज हम क्या करेंगे, हम बालों को section out करेंगे कुछ इस तरह से. I am going to like do this. So I'll tell you eventually जब हम बाथरूम जाएंगे, but basically this is going to be one section for Olaplex, one section for minimalist और बीच में से I'm gonna like section out my.
So I am going to section out my hair like this, and इसको मैं कुछ नहीं करूँगी. This is going to be our K18 section, जिस पे हम काम करेंगे after we wash our hair. And obviously इसको तरीके से अलग से wash करना, section को अलग से रखना will be a bit of a challenge, but I'm up for a good challenge. So that is what we are going to do today, and obviously I'm going to shoot this video in parts. उसके बाद I am going to blow dry my hair like normal. Maybe I will style my hair, maybe I will not. Maybe सिर्फ blow dry करके I will show you the results. And उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे about the damage, कि किस टाइप की डैमेज के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है. बिकॉज मच लाइक स्किन इश्यूज, स्किन हेयर डैमेज सबकी सेम नहीं होती है. कुछ लोगों को स्प्लिटन ज़्यादा है, कुछ लोगों के बाल फ्रिजी हैं, कुछ लोगों के बाल फ्रिजी हैं बिकॉज दे आर कलर्ड, कुछ लोगों के बालों से केराटिन या कोई भी परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट उतर रहा है तो उसका डैमेज है. डैमेज बहुत सारे टाइप का होता है. सो ड्यूब है कि नहीं, वी विल फाइंड आउट. कीप वॉचिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू जस्ट ब्रश आवर हेयर, and I had not brushed my hair since morning. And I don't have hair fall. Literally एक strand निकला है. So the point is, मैं इसलिए बता रही हूँ कि if you take care of your hair, you do things right, आप कुछ भी करो, your hair will be healthy. बालों को सेक्शन आउट करेंगे. जैसे कि मैंने कहा था, एक सेक्शन विल बी ओलाप्लेक्स, एक सेक्शन इज गोइंग टू बी मिनिमलिस्ट, और बीच का एक सेक्शन हम रखेंगे फॉर K18, क्योंकि K18 लगता है बालों को वॉश करने के बाद. ओके, ये हो गया है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इस सेक्शन को, दिस सेक्शन, obviously this is a mirror, right? So see how you want to see, but this section is Olaplex. My right is Olaplex, my left is going to be minimalist. So because Olaplex, अगर आप ये वाला Olaplex यूज करते हैं, Olaplex number 3, ये आपके गीले बालों पे जाता है when your hair are dirty but wet. बट अगर आप ओलाप्लेक्स 0 के साथ इसे यूज करते हैं, देन यू नीड टू यूज दिस ऑन ड्राई हेयर. बाल वेट हो जाते हैं, फिर आप लगाते हैं ये. सो दैट्स व्हाट वी गोना डू. So my hair are completely soaked, they are wet with Olaplex 0. अब आती है बारी Olaplex 3 की. This is the amount I start with. Obviously when I'm doing my full hair I need more, but abhi ke liye this is fine. Okay. Oh. So this is what is happening right now, and ये हमने इस तरह से लगा दिया. So this is the right side, and ये हो गया है Olaplex ready. Now we need to get to this side, all of my hair, ये वाली side, and now we need to apply the minimalist product. अब ये जो minimalist, oops, now this is like a creamy gel formula. This is completely an oil based formula, and honestly I find it very difficult to apply. ठीक है. So as you can see, we are ready. Olaplex, we've got Malik Hair Repair, which is minimalist, और ये सेक्शन हमने छोड़ा है for K18. Now I'm just going to go through my life for the next 1 hour. उसके बाद हम करेंगे wash. I will not condition, क्योंकि K18 लगाने के बाद उसमें लिखा हुआ है that you're not supposed to condition. So I will not condition my hair. So you will literally see the actual results with just shampoo, and then we will eventually final verdict.
दिस हैज़ टू बी द टफेस्ट हेयर वॉश आई हैव डन. मतलब इतने से बालों को अलग रख के अलग से वॉश करके टाई करना, इट वॉज क्रेजी. आई एम प्रिटी श्योर थोड़ा बहुत मिक्स हो गया होगा, बट एनी विच वेज अ बिग पार्ट ऑफ द हेयर आई हैव केप्ट सेपरेट. अब आता है टाइम. सो मैंने बाल वॉश किए. आई डू नॉट कंडीशन माई हेयर, नो हेयर मास्क, नथिंग. अब आता है टाइम K18 को टेस्ट करने का. ना K18 गोज ऑन टॉवल ड्राइड हेयर, यानी टॉवल से जब आप बालों को सुखा लेते हैं. एंड देन यू नीड टू टेक एन एडिक्वेट अमाउंट, एंड उसके बाद आपको उसको बालों पे लगाना है. 4 minutes के बाद यू कैन डू whatever you want. You can blow dry, style, whatever you want to do. So let's go ahead and take an adequate amount. Oops, ये थोड़ा सा खत्म हो रहा है, so I have to like be extra careful. So this is the amount that I have taken. Now इसको बालों में ना इस तरह से करके you need to put it on your hair. I was trying to squeeze out. Okay. So let's do this. And that's it. अब blow dry तो हम सारे बालों को एक साथ करेंगे, and then we will look at the results. So I have let my hair air dry to about 50-60%. एंड वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं बालों पे डायरेक्टली ब्लो ड्रायर लगाती हूँ, आई ऑलवेज यूज दिस प्रोडक्ट विच इज दी वाओ कलर वाओ ड्रीम कोट. इट्स लाइक अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा शाइन भी आती है. बट बिकॉज हमें रॉ अनफिल्टर्ड रिव्यू चाहिए, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है. मैंने बालों को थोड़ा सा एयर ड्राई किया है, लेकिन अभी बहुत टाइम लग रहा है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू, जो थोड़ा सा गीला रह गया है, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लो ड्राई इट, एंड देन वी विल कंटिन्यू. Air drying is complete. Now we will just brush our hair. So बाल हमने separate कर लिए हैं. This is the Olaplex side, my right side, and this is the Malik hair repair side. Now ये जो K1 वाला था, let's separate it out. So this is the Olaplex side. This is the Olaplex side, and as you can see, it's super soft, super shiny, and frizz is very less. अब इसी side को अगर हम compare करें with the other side, which is the Malik hair repair side, softness में कोई फर्क नहीं है. The softness is exactly the same. But if you can see here, इस side पे फिर भी थोड़ा frizz ज़्यादा है, right? If you look at this, it's a little more frizzy here, ऊपर से, whereas this side, I don't know if you can tell on camera, but this side is way smoother. Olaplex is way smoother, very little frizz. इस side पे अभी भी you can see frizz थोड़ा है. Now let's open up and see this side, which is our K18 side. And the K18 side also has a little more frizz. You can see यहाँ पे बाल ज़्यादा colored हैं, and you can see more frizz here. ऊपर से obviously it's smooth, but then there is more frizz here. So this is what I want you guys to know. Now you also have to bear in mind कि मुझे बहुत सारी new growth है यहाँ पर. As you can see, all of this, ये जो बाल ऐसे उठे से हैं, this is all my new growth. So obviously जो new growth होती है थोड़ी frizzy, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, and that's fine. But even if I remove this, even if I put this new growth aside and then look at it, there is still frizz on the K18 side. For me, and I have used all of, ये आज मैंने section करके on demo, I have shown you on camera how the results work. But for me, the combination of Olaplex 0 and 3 is the best in the world. अगर आप सिर्फ बालों की स्मूथनेस की बात करें, लाइक इफ आई टच माई हेयर ऑल टुगेदर, इफ आई डू दिस, सारे ही बाल बहुत स्मूथ हैं, सारे ही बाल बहुत सॉफ्ट हैं. सो अगर आपको सॉफ्टनेस चाहिए बालों में, अगर आपके बाल रफ हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, यू कैन यूज द मिनिमलिस्ट वन. It's a great value for money, and your hair will be really soft. But if your hair are color treated, and color treated hair, and as you blow dry and style them, will constantly be getting damaged, and you need to constantly protect it. Olaplex for me is a clear winner. K18 also works in a very similar manner, जो हाँ वो आपके बालों के फ्रिज को और
डैमेज को स्मूथ आउट कर देता है. As you can see, it does have a smoothing effect. Both K18 and the Minimalist has a smoothing effect on your hair, whereas Olaplex, after one wash itself, you can see it really repairs the damage. This side is the smoothest, is the softest. This is my favorite side, and this obviously is not as bad, but I can tell you right now, from the way I feel my hair, from the way I see my hair, कि इस side पे फिर भी थोड़ा frizz और damage है, and मेरे बाल obviously all over same हैं. So my final verdict, and this is just my personal opinion, if I had to rate it, okay, Olaplex number 0, Olaplex number 3. The combination is expensive, but it is a clear winner. Now let's look at the Malik hair repair bond treatment. It is a great option for smoothing out your hair, for repairing the frizz, but actual repair, I don't think it does it. And the K18 as well is very similar to the Malik hair bond. So अगर dupe है, अगर Malik hair is a dupe, if the Minimalist product is a dupe, then it is a dupe for K18. It is not a dupe for Olaplex. And that is my final verdict. I don't know what you guys think, but मैं जानना चाहती हूँ in the comment section, because you've seen the whole process, you're seeing the hair now, you're seeing everything. What is your final verdict? ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, पर कैमरा पे कैसा दिख रहा है? What is your final verdict? Let me know in the comments below. And if you want to know how I style my hair, what are the products I use, go ahead, check out the next video. अगर वीडियो आपको पसंद आई है, and if you enjoy detailed content like this on hair and skin, do consider subscribing to my channel. I will see you next time. Till then, take great care of yourself. Bye.